Good morning, everyone. Jai Shri Sham. Let's start the Hssc previous year question part number 6. And without wasting any time, as always, let's go to the question number 1. Two magnetic lines of force. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डू नॉट इंटरसेक्ट. कभी भी दो मैग्नेटिक लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती हैं. फोटो के थ्रू भी आप ये चीज़ देख सकते हैं. Now move towards the next question. In an electromagnet, when current is switched off, the iron bar, the correct answer है loses its magnetism. This question is also very important. आप फोटो से भी आप ये चीज़ देख सकते हैं. Now next question. Open wiring is also known as casing capping wiring. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. आप फोटो से भी आपको केसिंग केपिंग वायरिंग दिखाई दे रही होगी. Now next question, what is the function of substation in a transmission and distribution system? It's a correct answer है option C, to reduce voltage which can safely be delivered to customers. So now move to the next question. The transformer represents as a correct answer है option C, static device. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एम्पलीफायर इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम? का करेक्ट आंसर, इन लार्ज ए वीक सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्शन. ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इलेक्ट्रॉनिक्स से है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस एन आउटपुट विद ए साइन वेव फॉर्म? एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हार्मोनिक ऑसिलेटर. नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉस ऑफ चार्ज मेथड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाई रेजिस्टेंस. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन कंट्रोल अल्टरनेटिंग करंट एंड कंडक्ट करंट इन बोथ डायरेक्शन? एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्राइक. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. विच आर एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मल्टीप्लेक्सर्स. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share my video, and thank you for watching all the questions. Thank you everyone.